Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to start our leave rules, that is CCS leave rules. So, let's begin this. Is short title क्या है इनका? That is these rules may be called CCS leave rules इनको बोलते हैं, ठीक है? और ये 1972 में आए थे. कब इनकी डेट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है इनकी? दैट इज ऑन 1 जून 1972 को. ठीक है, तो यस हमारे साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे रूल्स हमने कर लिए हैं लेकिन हमें इनकी डेट्स नहीं पता किस किस डेट को ये इफेक्टिव हुए थे या किस किस डेट को आए थे. ठीक है, हमें ये भी करना है कि सब रूल्स की जो है डेट लिखनी है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं क्योंकि समटाइम्स दे आस्क द डेट. ठीक है, तो डेट ऑफ ऑल रूल्स एक्चुअली ये लिखना है हमें. ये आप भी याद कर लीजिएगा. ठीक है, और जैसे ही हम भी याद करते हैं आई विल लेट यू नो अबाउट इट. ठीक है, यस जो इसकी डेट क्या है दैट विल कम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1972 को आए थे लीव रूल्स. ठीक है, 1 जून को आए थे. कैसे याद कर सकते हैं? 1972 1 जून, 1978 में DFPR. ठीक है, 1975 में TCS रूल्स, शायद 1976 में, 74 के कंडक्ट रूल्स या 64 के कंडक्ट रूल्स है. बहुत कन्फ्यूजन है. ठीक है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप इसको एक बार याद कर लेंगे. ठीक है, चलिए. तो बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ ये अप्लाई होते हैं. Same as other in these rules shall apply to government servants appointed to the civil service, civil post in connection with the affairs of the union, but shall not apply to. किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं देख लेते हैं. shall not apply to किन किन पर? रेलवे सर्वेंट है जी. देन वी हैव फर्स्ट इज रेलवे सर्वेंट पर नहीं होते हैं. देन वी हैव पर्सनल इन कैजुअल और डेली रेटेड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो भी कैजुअल है, डेली रेटेड है या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है उन पर नहीं है. पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, जिनको कंटिजेंसी से पे किया जाता है उनके ऊपर नहीं है. एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं है. देन वी हैव पर्सन एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं होंगे. ऑल इंडिया सर्विस पर नहीं अवेलेबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे. पर्सन लोकली रिक्रूटेड जो किए जाते हैं इन डोमेस्टिक या कॉन्सुलर सर्विसेज में, राइट, उन पर ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे. पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज. ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले पर नहीं होंगे लेकिन अगर अदरवाइज प्रोवाइड करता है तो जैसे कि पर्सन रिस्पेक्ट होम स्पेशल प्रोविजंस, अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया उन 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 पर्सन के लिए. ठीक है, तो यस वहाँ पर ये एप्लीकेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस है हैव बीन मेड और अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुछ ऐसा है और फॉर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो यस उनके ऊपर एप्लीकेशन. पर्सन गवर्न फॉर द पर्पज ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल्स, जो भी पर्सन जो है जो गवर्न किया था फॉर द पर्पज ऑफ लीव लाइक बाय द फंडामेंटल रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशंस, तो ये भी जो है उनके ऊपर पर्सन एम्प्लॉयड एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स. उनका जो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बोलता है कि जो पर्सन जो गवर्न है फॉर द पर्पज ऑफ लीव बाय द FR और बाय द सिविल सर्विस रेगुलेशन, मतलब एक ही बात है कि उनके उनके रूल्स कहते हैं तो होंगे. अ पर्सन सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स, तो उसके ऊपर भी क्या है, पर्सन एम्प्लॉयड एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज. ठीक है, होगा कोई भी अगर पर्सन है मान लीजिए सर्व कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है, बट है वो ऑन डेपुटेशन फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट से आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी उनके ऊपर वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, चलिए जी. बात करते हैं इसके बाद डेफिनेशंस की कि डेफिनेशंस क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं हम. इन दीज रूल्स अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो उसके अलावा जो है डेफिनेशन. एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन territory. Auditor means the accountant audit officer, whatever his official designation in whose circle and the office of the government servant is situated. ठीक है, ऑडिट ऑफिसर में क्या बोलते हैं ये कि कोई भी मीन्स द ऑडिट मीन्स द अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर वट एवर हिज डेजिग्नेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी किसी में गेस्टेड होते हैं. ठीक है, और क्या वट एवर हिज डेजिग्नेशन, की कोई भी ऑफिशियल डेजिग्नेशन हो वो मैटर नहीं करती. बस ये मीन्स द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर मतलब ऑडिट ऑफिसर. यहाँ कोई भी जो ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर होगा उसका मतलब वो ऑडिटर ऑफिसर होगा. अथॉरिटी क्या होता है? कंपिटेंट टू ग्रांट लीव. कौन है अथॉरिटी आपको? मीन्स द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. दीज रूल्स कंपेरेंट टू ग्रांट द लीव स्पेसिफाइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन कॉलम 2 ऑफ द सेंट शेड्यूल. तब ये इतना शेड्यूल शेड्यूल करके बोल दिया तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया इसमें कौन सा शेड्यूल है इसके अंदर.
है ना। तो हमारे पास ये दो दो शेड्यूल है एक तरीके से, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल, दो शेड्यूल है इसके अंदर। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखा है पेज नंबर, चेक कर लेते हैं यार एक बार क्या है इसमें। अच्छा, ये कौन कौन कर सकता है इनको, ठीक है। अथॉरिटी कंपेरेंट टू ग्रांट लीव, अर्न लीव, हाफ पी लीव, कम्युनिटी, इस तरीके से कोई भी जो है वो मिनिस्टर या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, CAG, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एनी अदर अथॉरिटी विच इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एनी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी टू विच द अथॉरिटी विच द अथॉरिटी 1, ठीक है, टू 5 मे डेलीगेट द पावर, इसलिए 5 तक कोई भी अगर डेलीगेट पावर करती है उनको, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन दैट मे स्पेसिफाइड डेलीगेशन, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन फॉरेन सर्विस, तो क्या है, द अथॉरिटी सैंक्शन टू ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस, और या फिर फॉरेन एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी जिनके ऊपर भी पावर डेलीगेट कर रखी है वो सब है। अथॉरिटी कंपेरेंट टू ग्रांट लीव मीन्स द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन क्वालिफिकेशन ऑफ दिस, कंपेरेंट टू कोई भी जो अथॉरिटी है दैट इज कंपेरेंट टू ग्रांट द काइंड ऑफ लीव, बस वही जो है अथॉरिटी कंपेरेंट होगी टू ग्रांट लीव। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कितना होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, or 1 year continuous service means continuous service of specified duration under the central government and includes the period spent on duty as well as on leave including extraordinary leave। तो यहाँ पर ये कहता है कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए, कम से कम, और ईयर्स ऑफ सर्विस या फिर 1 year ऑफ कंटिन्यूस सर्विस मीन्स कंटिन्यूस सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स द पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एज वेल एज ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। ये मुझे समझ में नहीं आया कि कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस मतलब ये कहता है कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और 1 year कंटिन्यूस सर्विस, और कम से कम आपको 1 year कंटिन्यूस सर्विस चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ओके, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स द पीरियड, जो है पीरियड इंक्लूड जो है द पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एज वेल एज ऑन लीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस क्या है आपकी, तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस देख लेते हैं आपका, or 1 year's continuous service means continuous service of specified duration under the central government and includes the period spent on duty, okay, spent on duty as well as on leave including EOL, मतलब जो है वो भी आपका EOL भी जो है उसके अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ फिर बोलता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन भी रिटायर होंगे, बोलता है डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट रिलेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट मंथ, ठीक है। मीन्स क्या है उसकी आफ्टरनून, मीन्स द आफ्टरनून ऑफ द last day of the month in which the government servant attains the age of prescribed for the retirement under the terms and conditions of governing service, ठीक है। यहाँ पर ये बोलता है डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गया आपका। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई भी मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नोटिफाइड फ्रॉम टाइम, ठीक है। और इसके अलावा इट इंक्लूड्स प्लानिंग कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, प्रेजिडेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी और द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो सब हो जाएगा इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। डिसेबिलिटी मतलब क्या बोला है, इन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी लाइक बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी विद हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स एज रेफर टू इन द राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉरेन सर्विस मतलब है मीन्स सर्विस इन गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे। तो फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है, इन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन हिज पे, उसकी जो पे जो मिलती है विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी, जो है पे मिलती है फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट और दी और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, नहीं मिलती है उसको फॉरेन सर्विस कहते हैं। फॉर्म अपेंडेड जो शेड्यूल के ऊपर है, आई पर बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट इज क्वाजी परमानेंट एम्प्लॉय मीन्स एन ऑफिसर हु हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन UPSC टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, ये बोलता है एन ऑफिसर हु हैविंग बीन डिक्लेयर्ड बाय UPSC टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज of the government of India has been appointed as temporary or officiating vacancy on the understanding given to him in writing before he took up the appointment that the vacancy is expected to become permanent but is not confirmed after completion of 3 years continuous service, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्वाजी परमानेंट एम्प्लॉय, कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्वाजी परमानेंट एम्प्लॉय कब होता है, जब एक ऑफिसर जो है हु हैव बीन डेलिबरेटेड, कोई भी एक ऑफिसर, कोई भी एक ऑफिसर है जो कि वो हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द UPSC, डिक्लेयर्ड बाय UPSC, ओके,
कि आप एलिजिबल हैं टू बी फॉर अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड टू टेम्पररी ऑन द गिवन हिम हैज़ बीन अपॉइंटेड टू अ टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी ऑन द अंडरस्टैंडिंग गिवन टू हिम इन राइटिंग, given to him in writing before he took up the appointment that vacancy जो है is expected to become permanent but is not confirmed after completion of 3 years continuous service. An officer who may be declared as quasi permanent under Caesar temporary rules 1960, ठीक है। तो क्वासी मतलब क्या है, एंड के भी एक ऑफिसर जो यूपीएससी ने बोला उसको दैट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड टू अ टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी, ठीक है, हैव बीन अपॉइंटेड टू अ टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी होती है ना, कोई भी टेम्पररी हो गया फिर ऑफिशिएटिंग वैकेंसी ऑन द अंडरस्टैंडिंग गिवन टू हिम इन राइटिंग दिया था दैट बिफोर ही टुक अप द अपॉइंटमेंट दैट ही वैकेंसी जो है इज एक्सपेक्टेड टू बिकम परमानेंट, वैकेंसी है वो परमानेंट हो जाएगी बट नॉट कन्फर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years, become permanent but is not confirmed after completion of 3 years continuous service. ठीक है, ऐसे को हम क्वाजी परमानेंट एम्प्लॉय बोले जाएंगे, ठीक है, कंफर्म बट इज नॉट कन्फर्म्ड आफ्टर 3 साल के बाद भी जो ना हो तो फिर क्वाजी परमानेंट एम्प्लॉय। The government servant in permanent employment means an officer who holds substantially or provisionally substantially in a permanent post or holds a lien on a permanent post or who would have held a lien on a permanent post had the lien not been suspended, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, that is government servant in a permanent employee. It means an officer who holds substantively or provisionally substantively a permanent post, who holds a lien on the permanent post, who would have held a lien on permanent post had the lien not been suspended, तो वो lien जो suspend नहीं होता तो, ठीक है। हेड ऑफ मिशन मीन्स एम्बेसडर चार्ज है ना, हेड ऑफ मिशन कौन होता है आपको पता ही है, चार्ज काउंसिलर जनरल हाई कमिश्नर। Military officer means an officer of the armed forces who is a commissioned officer of the army, navy, air force, a junior commissioned officer including an honorary commissioned officer, military officer commissioned officer भी होता है, as well as including an honorary, जो भी अगर कोई honorary commissioned officer तो उनको भी बोला जाता है, और other rank of the army, a branch list officer or rating of the navy, branch list officer or rating of the navy, और airman including master warrant officer, ठीक है, तो भी काउंट किया जाता है। देन वी हैव वैकेशन डिपार्टमेंट। वैकेशन डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, टीचर्स का हो गया, वैकेशन डिपार्टमेंट मतलब होता है अ डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वैकेशन आर अलाउड, ठीक है, जिसको हम जो है रेगुलर वैकेशन जो है अलाउड होती है, रेगुलर वैकेशन आर अलाउड ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, वर्ड्स नॉट डिफाइंड इन द फंडामेंटल रूल्स, जो FRSR है उसकी तरह रूल यूज़ होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र, अब आता है बात इसकी, रूल नंबर 4 है हमारा, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र और ऑन फॉरेन सर्विस, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र हो जाता है उसका, और या फिर किस फॉरेन सर्विस में, तो क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम दीज रूल अप्लाई शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दीज रूल्स वाइल ऑन टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी है टू हुम दीज रूल अप्लाई शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दीज रूल्स, shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer, अगर आप टेम्परेरी ट्रांसफर पर जाते हैं, while on temporary transfer to the Indian Railways और to state government, कहीं पर भी जाते हैं, और while on a foreign service within India, ठीक है, तो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तब भी आपके ऊपर ये रूल जो है एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हम, तो मान लीजिए कोई भी सेंटर से अगर रेलवे में चला गया, ठीक है, या फिर आप कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चले गए, ठीक है, तो या फिर आप फॉरेन सर्विस पे कहीं चले जाते हैं, इन दिस केस ऑल्सो दीज रूल्स जो हैं शैल अप्लाई, ठीक है। In the case of a government servant on foreign service outside India, including services like UN agencies within or outside India, or on temporary transfer to armed forces of the Union,
These rules shall apply only to extent provided in the terms and conditions of foreign service or temporary service. ठीक है. अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑन ऑन फॉरेन सर्विस में चले गए आप आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे यूएन एजेंसीज वगैरह चले गए विद इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और ऑन टेम्पररी ट्रांसफर या फिर आपका टेम्पररी ट्रांसफर हो गया टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, दिस रूल शैल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फॉरेन सर्विस एंड टेम्पररी सर्विस, ठीक है, एज द केस में भी. ठीक है, ये जो है ये ट्रांसफर कैसे होंगे, अप्लाई कैसे होंगे, अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल के अंदर बता रखा है वैसे वैसे. ठीक है, बोलते ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न बाय अदर लीव इन अदर लीव रूल्स, अनलेस it be otherwise provided in these rules. A permanent government servant to whom these rules do not apply, when transferred temporarily to a service or post to which these rules apply, shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer. And देखिए, unless it be otherwise provided in these rules, a permanent government servant to who कोई भी अगर वैसे अलग से बता रखा तो एक अलग बात है, कह रहे हैं अदरवाइज कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई, जिनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, क्या, व्हेन ट्रांसफर टेम्परली, आप जो है किसी के ऊपर टेम्परली ट्रांसफर किए गए टू सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई, जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई होते हैं, ओके, शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द लीव रूल्स विच वर एप्लीकेबल टू हिम बिफोर सच ट्रांसफर. Unless it be otherwise provided in these rules, a permanent government servant to whom these rules do not apply, a permanent government servant to whom rules do not apply, unless it be otherwise provided in these, when transferred temporarily to a service or post, these rules apply, shall remain subject to the leave rules that are applicable for such transfer, and provided that where military officer not in permanent civil employ has elected those civil rights to pay, his leave shall be regulated as per the provision under these rules. Provided further that in the event of release discharge from the armed forces, he shall carry forward the annual leave due to him with effect from date of such release or discharge. Okay, but when transferred temporarily to a service or post to which these rules apply, so आप transferred temporarily to a service or post to which these rules apply, ठीक है, shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer. Transfer from service or post governed by other leave rules, provided that where a military officer not in permanent civil employ, has elected to draw civil rates of pay, his leave shall be regulated as per provisions under. Provided further that in the event of his release or discharge from armed forces, he shall carry forward the annual leave due to him with effect from date of such release or discharge. When appointed substantively onto a permanent post to which these rules apply, shall become subject to these rules from the date of such appointment, in which case the leave at his credit under the rules previously applicable to him shall be carried forward subject to maximum limits of accumulation as laid down in Rule 26. The leave so carried forward shall first be exhausted before the leave earned under these rules is availed of. Thus, leave salary is in respect of leave carried forward shall be borne by the department or the government from which the government proceeds on leave, provided that in the case of military officer, half pay leave equal to the number of days of furlough shall also be carried forward in addition to earned leave equal to the number of days of annual leave on the date he is so appointed, if it is permissible to grant him under the armed force. Okay, मुझे इसका कुछ भी समझ में नहीं आया. ये रूल नंबर 5. Okay. एक और बार ट्राई करते हैं. ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न बाय अदर लीव रूल्स. ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज, जब आप उन सर्विसेज से आते हैं और पोस्ट उन सर्विसेज से आपका ट्रांसफर होता है, पोस्ट जैसे गवर्न जो है अदर लीव रूल्स कर रहे हैं, unless it be otherwise provided in these rules,
permanent government servant to whom these rules apply do not apply, whom these rules do not apply, है ना. हाँ, when transferred temporarily to a service, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज कह रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न बाय अदर लीव रूल्स. तो मान लीजिए, तो ऐसे मान लीजिए आर्मी से कोई आपके पास आ गया, ठीक है. unless it would unless it be otherwise provided in these rules, a permanent government servant to whom these rules do not apply. तो यहाँ पर क्या बात होगी, जैसे आर्मी वाला बंदा अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो द व्हेन ट्रांसफर टेम्पररी टू अ सर्विस, मतलब वो जो बंदा है यहाँ से आर्मी वाला जो पर्सन है ट्रांसफर हो गया उसका सीएसएस में. व्हेन ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई, है ना, व्हेन ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer. ओके, तो ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज अगर आप आते हैं, देन इट शैल रिमेन, कहता है shall remain to the leave rules which were applicable to him before such transfer. ठीक है, आर्मी से अगर कोई यहाँ पर आता है तो उनके ऊपर वही आर्मी वाले रूल चलेंगे. प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मिलिट्री ऑफिसर इज नॉट इन परमानेंट सिविल एम्प्लॉय हैज इलेक्टेड टू ड्रॉ सिविल रेट्स ऑफ पे. तो कोई मिलिट्री ऑफिसर नॉट इन परमानेंट सिविल एम्प्लॉय, not in permanent civil employee has elected to draw civil rates of pay, his leave shall be regulated as per provision under these rules. जैसे उनकी पे अगर होती है, not in permanent civil employee पे has elected, जैसे उनको has elected to draw civil rates of pay जैसे होगा, तो ये जो है ये उनके लीव रूल जो है ना, लीव will be regulated under these rules. Okay, provided further that in the event of his release or discharge from the armed forces, okay, वहाँ से रिलीज कर दिया उसको, he shall carry forward the annual leave. ठीक है, अगर उसको डिस्चार्ज या रिलीज कर दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज से ही, आर्म्ड फोर्सेज से उनको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो ही शैल कैरी फॉरवर्ड द एनुअल लीव, तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे एनुअल लीव को अपनी, शैल कैरी फॉरवर्ड द एनुअल लीव, अपनी एनुअल लीव को कैरी फॉरवर्ड करेंगे वहाँ से, ठीक है, ड्यू टू हिम विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिलीजिंग और डेट. व्हेन अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू अ परमानेंट पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई शैल बिकम सब्जेक्ट टू दीज रूल्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. तो फिर ये जो है ही शैल बिकम सब्जेक्ट दीज रूल फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. In which case the leave at his credit under the rules previously applicable to him shall be carried forward subject to the maximum limit. ठीक है, वो जो जितनी भी उसकी जो in which case the leave at his credit, उसके पास जो leave at his credit थी under these rules previously applicable to him shall be carried forward, वो जो है carry forward हो जाएंगी subject to a maximum limit of accumulation laid down on it. The leave so carried forward shall first be exhausted. जो भी leave आपके पास so carried forward जो आएंगी ना आपके पास shall first be exhausted, आपको पहले वो एग्जॉस्ट करनी है before the leave earned under these rules is availed of. The leave, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, कोई भी मिलिट्री ऑफिसर आता है तो उसके लिए द लीव सो अर्न तो कैरिड फॉरवर्ड दूसरे डिपार्टमेंट से आती है, उसको आपको एग्जॉस्ट करना है पहले, ठीक है. तो बोलता है आपका द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीव कैरिड फॉरवर्ड शैल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट. तो लीव सैलरी इस केस में कौन करेगा, लीव सैलरी रिस्पेक्ट टू लीव कैरिड फॉरवर्ड शैल बी बोर्न बाय द मिनिस्ट्री, department or government from which the government servant leave, from which the government servant proceeds on leave, जिस पर भी लीव से जाएगा वो उस टाइम पर उसको एप्लीकेबल. Provide that in case of a military officer half pay leave equal to the number of days of furlough shall be carried forward in addition to the earned leave equal to the number of days of annual leave on the date he is appointed. बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, को मिलिट्री ऑफिसर जैसे हमने बताया हाफ पे, इन केस ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर हाफ पे लीव जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ फरलो, फरलो की जगह पर उनको जब फरलो मिलती है ना, फरलो की जगह पर उनको एचपी मिलेगी. हाफ पे लीव इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ फरलो कैन ऑल्सो भी कैरिड फॉरवर्ड, तो ये हाफ पे की जगह उनको फरलो मिलेगी, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी इन एडिशन टू द अर्न लीव इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ एनुअल लीव on the date he is so appointed. ठीक है, बोलता है in addition to the earned leave equal to the number of days of annual leave on the date he is so appointed. ठीक है, and it would be permissible to grant him under the leave rules of armed forces. It would be permissible to grant him under the leave rules of the armed forces. क्या होगा वैसे. ट्रांसफर टू इस्टेब्लिशमेंट, ट्रांसफर टू बोल रहा है अगर आपका किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर होगा तो गवर्नमेंट बाय दीज रूल्स अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल वेयर लीव ट्रांसफर आर गवर्न बाय फैक्ट्री सेक्टर एंड अथॉरिटी गवर्नमेंट टू ग्रांट लीव शैल मोटो इशू एन ऑर्डर ग्रांटिंग कैश इक्विवेलेंट टू हिज लीव सैलरी. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी जो अथॉरिटी है ना,
ग्रांट लीव सेल सू मोटो उनको इशू करेगी एन ऑर्डर ग्रांटिंग सच इक्विवेलेंट ऑफ, आपको क्या मिल जाएगा उसका, आपका मिल जाएगा इशू एन ऑर्डर ग्रांटिंग कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव एट इज पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव एट इज पीरियड मैक्सिमम ऑफ 300 and cash or granted shall be sum equal to leave salary as admissible for earned leave and leave salary as admissible for half pay leave plus dearness allowance, प्लस आपको dearness allowance दिया जाएगा admissible on that leave at the rate in which force on the date of surrender ceases to be government servant by the provincial, provided that जो है in the event of his return to a post or service to which apply the benefit of cash equivalent of leave salary payable under rule 9 shall be modified as under, ठीक है, provided that the in the of his return मान लो वापस आ जाता है, ठीक है, in the event of his return to a post or service to which the leave will जो 97 apply the benefit to of cash equivalent of leave salary payable under rule 39 shall be modified as under, हम superannuation पे कैसे करेंगे आप इसको, encashment of leave shall be subject to the condition that the number of days of both earned leave and half pay leave for which encashment has already been allowed under this rule and the number of days of earned leave and half pay leave to be encashed on superannuation does not exceed 300 days से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो बोलते हैं एनकेशमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर अगर वो वापस आ रहा है, ठीक है, एनकेशमेंट ऑफ लीव शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नंबर ऑफ डेज ऑफ बोथ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव फॉर विच द एनकेशमेंट हैज ऑलरेडी बीन अलाउड, के लिए जो है एनकेशमेंट जो है ना हैज ऑलरेडी बीन अलाउड, आप कर दिया पहले से ही, ठीक है, अंडर दिस रूल एंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव एंड हाफ लीव टू बी एनकेश्ड ऑन सुपरन डज नॉट एक्सीड 300, ठीक है, on premature retirement cash equivalent of unutilized earned leave and half pay leave should be set to the condition that the number of days of earned leave and half pay leave for which encashment के लिए आपने encashment ले ली has already been followed under allowed under this rule and the number of days of earned cash on premature retirement shall be not exceed 300 rupees, 300 days cash equivalent to unutilized जितनी भी आपकी पर leave and half pay leave shall be set to the condition, ठीक है, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहे हैं आप कहीं जाइए कहीं से भी आइए, आपको पास दोनों आपको जो है मिला के आपको इतना ही मिलेगा जो कि 300 रुपीज़, ठीक है, तो प्लस में आपको डीएनएस अलाउंस भी मिलेगा, ये भी। चलिए हम रूल नंबर 7 पर आ गए हैं, अभी रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कहता है राइट टू लीव, कि किस किस को जो राइट टू लीव है, ठीक है, राइट टू लीव देख लेते हैं, राइट सबसे पहले बोलता है लीव cannot be claimed as a right as a matter of right, ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट लीव जो है इट इज़ नॉट योर राइट, कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट व्हेन द एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस सो रिक्वायर्स लीव ऑफ एनी काइंड, तो अगर मान लीजिए एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज हो जाती हैं तो लीव ऑफ एनी काइंड में बी रिफ्यूज्ड रिवोक्ड by the competent authority going to grant it, but it shall not be open to him to alter the kind of leave applied for except at the written request of the government servant, ठीक है, provided that leave applied under rule 20 shall not be refused or revoked with reference to medical authority whose advice shall be binding, ठीक है, तो बोलता है रूल 20 के अंदर आपको क्या कहता है, लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पे कहता है फर्दर दैट लीव जो है अप्लाइड अंडर रूल 20 shall not be refused or revoked without reference to medical authority whose advice shall be binding, इसमें जो है उनकी जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग, ठीक है, तो मैं जो समझ में आया इसके अंदर में वो यही है कि आपका लीव जो है दैट कैन नॉट बी एज ए मैटर ऑफ राइट, और जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है मे रिफ्यूज कर सकते हैं, रिवोक कर सकती है रूल को, बट कैन नॉट ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव, ठीक है, उसको वो नहीं करते। आगे चलते हैं आपका earned लीव जो है शुड नॉट ओनली बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, ऐसा कुछ बोला गया है इसके अंदर, लीव शुड नॉट बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी इनकरेज रेगुलरली, ठीक है, ये तो ठीक है, इसके अलावा बोलता है लीव शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड, लीव जो है लीव शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, rules and provide that leave cannot be claimed as a matter of right when refuse और refuse कर सकते हैं और आपको रिव्यू कर सकते हैं
When discretion is reserved under the authority government granted. This because it is not a possible to let all who want to leave at a particular time to have it at that time, and there is a limit beyond which staff cannot be permitted without dislocating the working of an institution. However, not intended to be used to update the leave entitlement of the staff. It is desirable in the interest of efficiency of public service that government servants take earned leave at suitable intervals and return to work keen and refreshed. The question has been reviewed by the government in the light of recommending a regarding increase in ceiling of earned leave from 180 days to 240 days. While accepting the recommendation, the cabinet has approved that earned leave should not be denied to an employee, especially in the last 10 years. This carries so that earned leave accumulation beyond 180 days normally do not take place. ज़्यादा ना हो. The leave sanctioning authorities are therefore requested to ensure that is denied to an employee. ठीक है. फिर बोलता है आपका 8th रूल कहता है आपका रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव. A government servant claim to leave is regulated by the rules in the time of the government servants claim to leave is regulated by the rules in force at the time the leave is applied for and granted. Okay? यहाँ पर क्या कहता है रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी जो क्लेम है टू लीव दैट इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स एट द टाइम द लीव इज अप्लाइड. ठीक है. इसका रेगुलेशन क्या होगा जिस टाइम पे रूल अप्लाई किए गए वो वाला रूल देखा. ठीक है. इफेक्ट ऑफ डिसमिस रेजिग्नेशन लीव एट क्रेडिट. अगर मान लीजिए डिसमिस करता है किसी का रिमूव रेजिग्नेशन का तो उससे जो लीव है उससे क्या फर्क पड़ता है. एक्सेप्ट except as provided in Rule 39. As this rule, any claim to leave to the credit of a government servant is dismissed or removed or resigns from government service from the date of such, except as provided in Rule 39. Okay. Any claim to leave to the credit of government servant who is or resigns from government resignation. Except as provided in Rule 39. Leave cash payment in lieu of leave beyond the date of retirement. Leave cash payment in lieu of leave beyond the date of retirement retirement of quitting service. यहाँ पर ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ डिसमिस है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल. ओके. एनी क्लेम टू लीव to claim to the leave to the credit government servant who is removed resigns from government service. This is from the day. ठीक है. तो बोलता है कोई भी आपका जो क्लेम है ना लीव टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज उसको डिसमिस कर दिया जाता है रिमूव किया जाता है या फिर वो रिजाइन कर देता है वो सीजन फ्रॉम द डे ऑफ फ्रॉम द रिमूवल और रेजिग्नेशन. तो उसी दिन से वो खत्म हो जाता है. इट सीजन फ्रॉम द डे. फिर जब वो रिमूव ही हो गया तो उनका लीव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना. रिमूव हो गया डिसमिस कर दिया उसको. ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ सच. ठीक है. तो उसी दिन से खत्म हो जाएगा. रिमूव कर दिया उसको रिजाइन कर दिया उसने. ठीक है. Where a government servant applies for another post under the government of India but outside his parent office or department, and if such application is forwarded through and is required to resign for taking up the new, the resident shall not lapse of 50. जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट अप्लाइज करता है वो अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट के लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आउटसाइड हिज पेरेंट ऑफिस. ठीक है. वो डिपार्टमेंट एंड इफ सच एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड अगर वो एप्लीकेशन जो है ना दैट इज फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल अगर हो जाती है. ठीक है. दैट इज थ्रू प्रॉपर चैनल एंड द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू रिजाइन. तो जो है रिजाइन करने की जरूरत है तो बिफोर टेकिंग द न्यू. तो सच रेजिग्नेशन जो है शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ द लीव टू हिज क्रेडिट. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सच रेजिग्नेशन शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ द लीव टू हिज क्रेडिट. ठीक है. A government servant who is dismissed or removed from service and is reinstated on appeal or revision entitled to count for leave his prior to dismissal as the case may be. ठीक है. अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको रीइंस्टेट किया जाता है. ठीक है. अपील और रिविजन तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू काउंट फॉर लीव सर्विस प्रायर टू डिसमिसल. तो काउंट होगी आप.
Government servant who having retired on compensation gratuity. A person who having retired on compensation or invalid pension or gratuity is re-employed and allowed to count his past service for shall be entitled to count his former good thing. पूरा लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट है इफ इज रिटायर्ड ऑन कॉम्पनसेशन रिटायर हो गया या फिर किसी भी इनवैलिड पेंशन में हो गया या फिर ग्रेचुटी जो है ग्रेचुटी री एम्प्लॉयड उसको दोबारा से री एम्प्लॉय कर रहे हैं एंड अलाउड टू काउंट हिज पास सर्विस खुद ही कह रहे हो आप पास सर्विस काउंट होगी ही शैल बी एंटाइटल्ड टू काउंट हिज फॉर्मर सर्विस टुवर्ड्स लीव कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव इन ब्रेक चलिए अगला बात करते हैं हम इसका नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव मे कम्यूटेड कम्यूट तो कर सकते हैं वो गवर्नमेंट की सर्वेंट की रिक्वेस्ट पर ठीक है द रिक्वेस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट द अथॉरिटी विच ग्रांटेड द लीव मे कम्यूट इट प्रोस्पेक्टिव तो बाद में भी हो सकती लीव ऑफ डिफरेंट काइंड विच वाज ड्यू एंड विजिबल टू हिम एट द टाइम ऑफ द लीव ग्रांटेड बट गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट क्लेम सच कम्यूटेशन इज अ मैटर ऑफ राइट बट वो क्लेम को नहीं कर सकता ये मेरा राइट है हाँ उनके अथॉरिटी के ऊपर जो है उनके ऊपर क्या है अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव but provide that no such leave shall be considered unless received by a secretary or any other authority designated in this behalf within a period of 30 days. ठीक है क्या है provide that no such request shall be considered unless received by authority or any other authority designated within a period of 30 days के अंदर अगर आएगा तभी होगा concerned government servant joining his duty on the expiry of the relevant availed of by him ठीक है 30 days के अंदर अंदर आपको करना joining his duty on the expiry spell leave available of by him ठीक है तो आप जो है 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको करवा सकते हैं कि कम्यूट करा सकते हैं The commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the that is say that any amount to him in excess shall be recovered and leave जो है granted to otherwise leave commute provision of rule provision of definition sorry the commutation of one kind of leave into another shall be subject to the adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted granted to the government the amount paid to him in excess shall be recovered any errors due to him shall be paid okay extraordinary leave जो है granted to medical certificate or otherwise may be commuted into leave not due the मान लीजिए कोई आपको granted to medical certificate ठीक है or otherwise may be commuted और अदरवाइज जो है मे नॉट ड्यू तो दोनों होगा इसके आपको अभी जो भी आपको वो आपकी लैप्स हो जाएगी ठीक है बात करते हैं हम इसका commutation of the commutation of leave of one kind to leave kind cannot be done after the employee ceases service ठीक है so one kind taken और हो सकते आपको इसके अंदर for example extraordinary leave retrospectively converted into not due and earned leave in half अगर मान लीजिए मान लिया आपकी जो एल थी एल पर गए earned leave in half pay
medical certificate into commuted leave. For extraordinary leave जो है भी आपके पास है, ये भी converted into leave or due, और earned leave into half pay leave. earned leave को आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें PL में, ठीक है. और earned leave इसको आप कहते हैं by producing medical certificate. As the case may be, the government should apply for such 30 days. ठीक है, तरीके से भी हो सकता है. And conversion of one kind of leave into leave of different kind is permitted only when applied by while in service and not after quitting service. ठीक है, बोलता है commutation of one kind of leave into another cannot be done after employee ceases to be in service. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका. फिर आपको बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव की कौन कौन सी लीव जो है आप कंबाइंड कर सकते हो. ठीक है, बारे में बात करते हैं हम आपसे. The leave sanctioning authority may commute retrospectively without leave inspection. 32 कहता है ये. The leave sanctioning authority may commute retrospectively periods of absence without leave to extraordinary leave. है तो ये मतलब क्यों नहीं समझा पा रहा था. The authority commute to grant leave may commute prospectively period absence without into extra कर सकते हैं. prospectively कर सकते हैं. बहुत पावर है भाई. ठीक है, आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव. ठीक है, क्या क्या है वो देख लेते हैं. बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज एनी काइंड ऑफ लीव अंडर may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave. Casual leave which is not recognized as leave under these rules shall not be combined with any other kind of leave under these rules. Except as otherwise provided in the, तो जो इस रूल में दे रखा है बस भाई. एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दिस मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विद काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव. कैजुअल लीव जो है which is not recognized as leave, okay, under these rules shall not be combined with any kind of leave established and admissible under. तो अब ये कह रहा है कि कैजुअल लीव को तो वो जो है दैट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव. ठीक है, कैजुअल लीव जो है वो इट्स नॉट अ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कैजुअल लीव जो है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीव. ठीक है, स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में बोलते हैं जनरल रूल इट इज ओपन टू द कंपनी टू ग्रांट कैजुअल लीव इन कॉम्बिनेशन विद कंपनी grant casual leave in combination with special casual leave. ठीक है, but in cases where it is permissible to grant regular leave in combination with casual leave should not both casual special casual leave or and regular leave. Where it is permissible to grant regular leave combination special casual leave shall finding of officer who avails of half day casual leave in the afternoon may be unable to resume duty on the next day working day because of unexpected illness or some other combined grounds.
as an exception to the general rule, be permitted to combine half-day casual leave with regular leave if with a due to disagreement or other valid grounds. Not be allowed the half day, last half a day is casual leave up to the afternoon. So with application as an exception to the general rule to be permitted to combine half day casual leave with regular leave in his absence when the was due to comparing grounds. Those who have only half a day casual leave at their grade and who will not attend office on the next working day, having already applied for leave for the kind due and to cover their absence for that working day and for subsequent days, if any, should not be allowed the last half a day's casual leave in the afternoon. Have only have half a day's casual leave. ठीक है तब नहीं गए नंबर 12 कहता है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव फॉर एनी काइंड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा जो है 5 साल की मिल सकती है unless the president in view of exceptional circumstances the case otherwise determines a government servant who remains absent is exceeding 5 years other than on a foreign service with or without leave shall be deemed to be have resigned from the service. ठीक है the exception unless the president in view of exception 5 years without leave shall be deemed to be have resigned कि उसने रिजाइन कर दिया उसको ऐसा माना जाएगा कि उसने रिजाइन कर दिया 5 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं हो सकती नहीं ले सकते आप ठीक है प्रोवाइडेड दैट a reasonable opportunity क्या कारण रहा provided that this rule shall not apply to a case where leave is applied on medical service. The rule वहाँ पे applicable where the leave is applied medical service with the disability. फिर आपका बोलता है इससे अगला Rule 13 कहता है आपका an official on leave should not take any service or employment without obtaining prior consent from the exceptional service on file on leave. Servant has been permitted private practice been permitted to undertake casual work or employment while on leave, including leave preparatory to retirement, shall not shall not take take up any service or employment elsewhere, including private profession found in medical, without obtaining the previous of the president. If the proposed service or employment lies elsewhere in the authority empowered to appoint him if the proposed service or employment lies in India. And if the proposed service lies elsewhere than और वो जो भी अथॉरिटी एम्पावर्ड है उनसे अपॉइंट ये प्रपोज सर्विस जो है गवर्नमेंट लाइज इन इंडिया no government servant while preparatory to retirement shall only take up and servant while only then leave preparatory to retirement only take up any
The grant of such permission is desirable in may have a service for time. Parent office, the office in work required to resign his while on leave, ready to return shall not be permitted private employee. Secretary and however, be permitted to take up employment with the public service. PSCP officer. Only referred for A for secretary as a business प्री प्रिपरेटरी अगर होती है आपके पास नॉट बी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बट how take up employment with this is a government servant who has post employment in India agreeable bad post bad post training so as in the burden is a government servant अब बात करते हैं 14th नंबर आता है application for and any application for leave of absence shall be made in the provided that government is unable to submit an implement on account of disability such as suicide submitted by the spouse. Okay. On account of disability application paid parents in case married ago child including the adopted child brother sister resident of majority any person who has majority of his guardianship will be deemed to have been made and submitted. Leave account की बात करते हैं as provided in the note below a leave account shall be maintained in form for the government by the order of leave account जो है shall be by order of officer authorized by him as provided in the note below. In the case of gazetted service,
and allows and the leave account shall be done at the office. Trusted government servant, trusted government है जिसकी हेड ऑफ ऑफिस जो है as provided in the notebook, leave and leave account shall be by the audit officer. Trusted government servant है by the head of office, by the head of office. account के बाद क्या होता है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू that is verification of title to verification is no leave shall be granted to a government servant till a report regarding its authority maintaining the leave. No leave shall be granted to a government servant report regarding its has been obtained. The authority maintaining the sanction to indicate the balance of report regarding the authority the leave. Where there is a reason that the obtaining of a report will be unduly delayed, the authority competent to grant leave calculate on the basis of agreement to the provision sanction. The sanction report. There is a reason to believe that the report will be unduly delayed. Authority जो है we calculate on the basis of the will be provision sanction. Grant of leave with this sub rule shall be subject to verification. Verification. If modified sanction. Case of guidelines registered government and audit officer the request is slip for in the case of a leave preparatory or retirement or where cash payment due of leave is granted and where cash due granted and cash payment paid credited paid in excess. For the leave not to be granted in certain way, leave shall not be granted to government servant who competent punishing authority has declared granted to a person. A competent punishing authority जो है has decided to dismiss it and no leave during authority shall require approval. Government authority whose permission is by the leave
government servant to go abroad. The competent authority whose permission is to be taken by the leave sanctioning authority. Competent authority whose permission by the leave sanctioning leave. Huh? If part of government on the part of a communicate 21 days of receipt of the application by within the trading state. Okay. Then we have rule number 90 पर आ गया अभी. बोलता है rule number that is grant of leave medical survey to tested and non tested. इस तरीके से grant of leave medical survey tested और non tested. So an application for leave on medical certificate made by a gazetted government servant. ठीक है. Gazetted government servant shall be accompanied by a gazetted government servant shall be accompanied by a medical certificate given by a doctor. This seat is necessary if such a government servant is beneficiary. Okay. Given by CG, such a government servant is CG beneficiary or by a government hospital, or by authorized medical team and by an authorized doctor. No, by an authorized doctor, private hospital, CGS, or mental in case of hospitalization or in special disease like heart disease, cancer, etc. for the treatment of which the concern has been recognized for the gazetted servant who handle government health scheme at all times of illness away from or be outside the headquarters medical center of fitness. Provide that a government servant who is beneficiary. ये government servant है, ठीक है, who is वो beneficiary है, CG beneficiary है, beneficiary. Okay, if at time of illness is away, तो वो अभी away है, तो उन headquarter will produce क्या करेगा, he will medical certificate और ठीक है, इसमें भी given by an authorized medical में से दे सकता है. अगर वो अपने क्वार्टर से दूर है एम में के थ्रू जो है दे सकता है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, शायद एग्जाम में भी है. जो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस एम ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवे, अगर वो अवे है. क्या बोलता है आपके स्पेक में, अ नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट shall be accompanied by medical certificate given by that non gested at all time जब अवे है गवर्नमेंट हेल्थ की प्रोसीड्स outside the headquarter medical certificate by registered medical practitioner. There is no medical वहाँ पे जो है there is no authorized and available अगर 8 किलोमीटर residence place of temporary, then he finds difficult to implement
फिटनेस क्या रहा फिर like providing that the known at a time of illness from center area or position headquarter of reduced significant or registered medical staff are employed. Defining clearly the nature and providing defining clearly the clearly क्या है उसका case of a non-gazetted government registered clinic मानी हुई dentist case of dentist in the case of a gazetted government certificate given by Ayurvedic so provided employee it falls ill provided this in case of government service सिविल अगर किसी को आ गई तो मेडिकल सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफाई करना चाहिए द नेचर ऑफ द डिसीज मान लीजिए कार्ड डिसीज सर्टिफाइड और ऑफ डिसीज ठीक है द डेट फ्रॉम विच थर्ड डेट देगा सर extent where there are reasonable if there are reasonable prospects government servants will fit not fit further there are reasonable prospects the government will fit not state that okay the purpose of putting the government is certified then डॉक्टर कोई भी डॉक्टर है अगर हेल्थ स्कीम दे और स्पेशलिस्ट मल्टीपल
और जो है रेफरेंस फॉर head of office the authority competent currently may at the for authority to get this or as by recruit government bank of the applicant government not the fact of the but the by the grant of medical order का वेट करना है grant of medical complaint to grant time not how time ठीक है less D1 सही debited other than D1 ये आपको इम्पोर्टेंट है then they have power to waive off इसके लिए waivers पे use सकते हैं such will be treated as will be treated but should be debited even the debt will be then बोलते हैं grant of legal government servant vested with an resident residing within the limits of state that was opted out of seat
CEO for government. I would like to take a 5-minute break.